So, Assalamu alaikum all. Thank you for joining on such a short notice but such a very important topic for discussion today. Today we will be discussing on a very important theme, that is the role of leadership in creating the culture of work ethics. So basically we will be covering the ethical part of organization, especially in the corporate world, where we need to focus more on the nitty-gritty and integrity of professionalism and all these things. So let me introduce to our esteemed panelists for today. On my left side is Mr. Ramesh Kumar. He has been working in various sectors voluntarily. He's connected with various organizations. Apart from that, he's also working in Pak Takaful as head of a particular department. And with us we have Mr. Nazir Memon. He has a very versatile profile of working on World Bank projects in collaboration with Sindh government, and recently he worked on Karachi's neighborhood initiative. And Skelawa, he is also now just working on water and barrages initiative. So lastly we have Ms. Hina Ali Sheikh. She is also having versatile experience of development sector. She is right now connected with NGO World's project, and apart from that she is co-founder of Counseling Lounge. So welcome them with a big hand. And the plus point that I would like to mention here is all of them are our proud alumni. All of them have graduated from ZABFM from various programs. So we appreciate our alumni coming back home at ZABFM. So I will begin with the first question from all of you. How do you see the importance of ethical work practices in any organization? First of all, thank you so much, Dr. Kamran Saab, for inviting. और your topic जो है वो that you have selected regarding the leadership and ethical जो practices, it's very important and crucial. क्योंकि एक organization अच्छी जो है वो तब grow करती है when there are very good leaders. Along with the leaders, there must be a good ethical practices. Ethical, जब हम कहते हैं ethical practices से क्या मुराद है? Ethical practices comes the values, the norms, the ethics, the behaviors, the attitude that the organizations has. अगर किसी भी organizations, since I have worked more than 4 organizations so far and I have been affiliated with the different sectors as well, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में एक दो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में वहाँ पे सिर्फ मसला आ रहा था कि आपके एथिकल प्रैक्टिसेस जो अलाइन नहीं थी आपकी पॉलिसीज़ थे. जब आपके विजन और मिशन तो हर छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बन जाते हैं. सॉरी टू से, अगर आपने देखा होगा कि हर छोटी कंपनी के भी विजन होते हैं कि हमें जो सक्सेसफुल होना है, हमें एक कस्टमर ओरिएंटेड जो कंपनी होती है. अगर आपने काफ़ी बैंक्स में भी काम कर रहे हैं तो बड़े बड़े बोर्ड जो लगे हुए होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, और जो इवन जो है वो बाहर अगर किसी न्यूज़पेपर्स में या सोशल पे तो हर किसी के बने हुए. बट डू यू रियली थिंक कि वो उस विजन्स को अपने एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करते हैं या नहीं करते हैं? लिखना, पॉलिसीज़ बनाना हर कोई जो सबको आता है, सब कुछ कर लेगा. द ओनली थिंग दैट मैटर्स whether that organizations or the companies is actually implementing or not. जब implementation पे जो बात आ जाती है तो फिर थोड़ा सा जो है वो काफ़ी पता चल जाता है कि where actually the organizations is doing other things. Within the organizations जब हम ethics की बात करें, ethics का ये मतलब नहीं है कि आपको जो values करनी है. No, ethics means you have to be perfect in different areas like the discipline, like the respect, delegation, teamwork. ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जो होनी चाहिए. उसके बगैर जो है वो आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते. वो कब होगा? जब आपके पास जो अच्छे लीडर्स होंगे. क्योंकि अगर आप घर में भी देखें, अगर हम पर्सनल लाइफ में लेंगे कि हम पेरेंट्स जो है वो जो काम करते हैं उसी को देख के हमारे बच्चे वो काम करते हैं. बिकॉज द चिल्ड्रेन लर्न्स फ्रॉम योर पेरेंट्स. एज दे ग्रो दे गो टू द स्कूल, दे लर्न फ्रॉम देयर टीचर्स. सिमिलरली ऐसे ही है लीडर्स जो बैठे हुए होते हैं, CEO वगैरह. क्योंकि आई हैव द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द CEO. आई नो द CEO किस टाइप का जो लीडर है, वेदर इट्स ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो आजकल जो लेस इफेक्ट लीडर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीडर्स हैं. तो वो आप उनसे जो है वो लर्न करते हैं. So coming back to the main question, again the Dr. Saab will discuss and ask for the more questions. So I think let's move to the other panelists and he will respond. Thanks everyone. Which
not only students, but I believe you work in different organizations, so you are more aware about the work culture in your respective organizations. I am the graduate of this esteemed institutions when I crossed 50 actually. So maybe more than that, I realized that project management is a very important subject. So after enjoying all my services, grades in government and with international organizations, I decided that learning is never, ending, and it's better to learn with new people, with new organizations, with new theories. So coming to this point of work culture or role of leadership in developing ethics, one part is actually a theory, which we learn, which we study, and which we train. That this is how a culture is developed, either ethical basis or organizational basis. But when you started working in organizations, situation is different. And every day you get shocks, every day you get different unforeseen issues, and you end with the day which are not actually planned. So when your head is on the pillow, you count the blessings of the day, and then you find so much unforeseen. Even in your daily life, you see different. Sometimes you drive, on the road, accident occur, and then that is followed by a fighting, which you never planned. So in an organization, when you are there for a good work, something happen, which result in a stress, which result in not fighting but discomfort. So this is very important to have a ethics or work culture in an organization that gives peace. And when we say that what is the role of leaders in this, and how it is developed, why it's important, I think it's always a win-win. Because an organization which holds a vision or a mission that wants to be implemented through stakeholders, through teams, through members, through employees, through society. So if an organizations want to have a such culture, that means it will advance your goal. It will accelerate your journey to achieve that goal. And the work culture in our organization is sometimes you find very strange, because in daily life we see that this has happened. There is a biasness in our organizations, in promotions, in delegating things. There is a power struggle. There are so many things which are not part of a good culture. So I think the culture which we really want is that it gives you comfort to work, and you really enjoy working there. And you enjoy not only working there, but you develop a good relationship with your colleagues, with your fellows, and with your leaders, motivators there. And it's important for a leader to delegate that part to the employees, and create a situation where every employee come to respect and honor the work. So sometimes you feel that you have done good job. There are 3-4 main things which really are surrounded in the work ethics. For example, trust. When you are working with each other, when the leader is working with you, you trust each other.
the leader, believes in the team. If a leader does not believe in the team, this means he or she cannot bring the positive change in an organization. So the first and foremost part is that you believe in team, and then delegating that team. And you become unbiased. You become leader of all, not a leader of a few people. So because your objective, your mission is to, achieve overall vision of your organization. You contribute in organizations up to the end of a society uplift. So this is how our work culture is advanced, and you have to be in humility. There's no much extraordinary proudness in that ethics. Some people, feel too much proud, and that reduce the level of engagement of other employees. Because you have to share, you have to contribute with them. And in an organization, there are none who can take that credit at soul at him or her level. So it's always a joint. And it also depends that how you celebrate that part. Either you are trying, either you engage as a team. So here comes as a good work ethics culture. And there are many other things which are part of that, but the ultimate is that work ethics implies engagement, and people do not run out from organizations, or when they are sitting somewhere in their social gatherings, some people start talking about their organizations. Some say good, some say our office is so bad and I am fully in stress. This means there are problems. Face it. So as a leader, I always try to find out a solution and to be but definitely in a situation where you work, there is always room for improvement. So nothing is perfect. So when we say nothing is perfect, this means every time you have a space to improve. So when you believe in improvement, like in MSPM, we believe one part is a continuous improvement. In total quality management, if I remember that part. So continuous improvement of a kind of agile way. So, bringing or ensuring good ethics, good work culture is a continuous improvement. Maybe later on I'll share. Assalamu alaikum. First of all, thank you very much, Dr. Kamran, to giving this opportunity. Secondly, I think our fellows have already been speak a lot about, और काफ़ी clarity हमें हो गई है. So I will try to evaluate something. Of course, we are talking about work culture, but I'll try to integrate this work culture with our personal ethics and social ethics as individual and then collective as a society. And of course, being a part of a counseling thing and in education from last 8 to 10 years, so I have learned one thing कि हमें लगता है कि सोसाइटी जो है वो डिसइंटीग्रेट है और हर कोई अलग अलग एक अपने साइलोज़ में, बट व्हेन एक्चुअली इट कम्स देयर आर मैनी पार्ट ऑफ अस दैट आर एक्चुअली इंटीग्रेटेड, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम. और हम जिस जगह से हमारी स्कूलिंग होती है, पेरेंटिंग होती है, फिर हमारी ग्रोथ होती है, एंड देन वी डिसाइडेड टर्शियरी लेवल एजुकेशन एंड देन वी गो टू द वर्क प्लेसेस, सो वी रिफ्लेक्ट अवर सेल्व्स. तो इट ऑलवेज बिगिन विद इन, एंड देन फिर वो एक जो सोशल आपका कंस्ट्रक्ट माइंडसेट बनता है, एंड देन एज अ सोसाइटी. So when we talk about it, I think we should see both things कि हाँ वो आ कहाँ से रही है. यानी जो चीज़ हम कहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, ये आप लोग भी शायद सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं कि सोसाइटी जो है वो एथिकली गलत चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जा रही है जो कि पहले नहीं होती थी और अब वो ज़्यादा नज़र आने शुरू हुई है. तो उसके पहले तो हमें कोर, आई ऑलवेज से बीइंग ए रिसर्चर, के पहले आप उसकी रीजंस के जाएं कि वाई वी आर बिकमिंग दिस, और फिर जो वर्क
का रिलेशन है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ अवर लाइफ. लाइक अगर हम 24 आवर्स इन अ डे डिवाइड करें तो आपका 1/3 इज़ वर्क, तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपके वर्क प्लेस में. सो एक शख्स जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चैलेंजेस से और इकॉनमी से और ऐसी फैमिली बिहेवियर से, सोशल इश्यूज से, पॉपुलेशन ग्रोथ से और बहुत सारे मसाइल फेस करके जब अपने वर्क प्लेस में आता है तो एथिक्स बड़ी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है उसको कंट्रोल करना. सो दैट इज़ रियलिटी. जैसे सर ने बात की कि हमारे पास हम समझते हैं वन इज़ द थ्योरी पार्ट जो बड़ा अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, यू नो, बड़ा सुनने में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी यू हैव टू यू नो रीचेक एंड रीविजिट योरसेल्फ कि आपके अपने एथिक्स भी कहीं क्वेश्चन मार्क ना होने शुरू हो जाए. सो इन दैट पार्ट टू स्टे विद योर यू नो इंटीग्रिटी और अपने एक एथिक्स के साथ मेंटेन करना ही इस वक्त चैलेंज हो जाता है. सो थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूँगी वर्क कल्चर और वर्क एड पे, क्योंकि ज़ाहिर टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है. सो जस्ट टू ऐड वन थिंग कि जब हम वर्क में ये सारी सिचुएशन अपनी देखते हैं तो आई थिंक बीइंग इन अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, सो वी हैव जो हम अपने लिए कर सकते हैं या वर्क कल्चर में अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एवरी डे, नॉट एवरी डे बट एटलीस्ट एवरी मंथ, और थोड़े अरसे बाद वी शुड हैव वन सॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स विद इन सेल्फ. आप जब कॉन्स्टेंट अपने आप को इम्प्रूव करने की, क्योंकि देखें अभी हम जिस दुनिया में हैं ना हम अपने बॉस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एथिक सिचुएशनल है, तो एथिक्स आपका हमेशा चैलेंज होता है जब आप हार्ड सिचुएशन में होते हैं. उस वक्त कितना डिसिप्लिन है, उस वक्त कितना एंगर कंट्रोल है, उस वक्त कितनी आपकी यू नो पर्सनैलिटी निकल के सामने आती है. सो आई विल सजेस्ट वन थिंग कि हम जब अपने कल्चर की बात करते हैं तो हम पहले अपने आप से शुरू करें. Great, wonderful ideas. And I will move to the next question about this discussion. We can have various perspectives of the work ethics. So one dimension is like day in day out we have various changes in the work design, like organizational culture, organizational practices. We introduce new trends. For example, we have flexible hours. There's flexibility. There's no continuous 9 to 5 job. Number one. Number two, we have so many technological innovations like AI, mostly we use in our work. So how do you think the innovation and introduction of new trends, they pose challenges to the work ethics? Thank you, Dr. Sir. That's a very interesting question. Regarding the punctuality and with the modernization, काफ़ी जो organizations ने अपने आप को mold किया है with the current era. अब recently जैसे the organization for which I am working, अब दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर में आपको पता है बैंक्स के भी काफ़ी टारगेट्स होते हैं, क्लोजिंग्स होती हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल जो सेक्टर्स होते हैं उसके जो वो डिफरेंट टारगेट्स होते हैं. सेम फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. तो हमने क्या किया है कि बैलेंस किया है. लाइक आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई हैव 20 पीपल अंडर माई सुपरविजन. तो व्हाट वी आर डूइंग, वैसे तो मंडे टू फ्राइडे जॉब होती है, लेकिन क्लोजिंग के मंथ्स में हम क्या करते हैं कि सैटरडे को भी लोगों को जो बुलाते थे. आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज एक आदत होती है फ्राम जनवरी टू नवंबर जो वो 9 to 5 और फ्राम मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे को कॉल करना सबसे पहले तो ये है कि ऐसे लग रहा है कि किसी के जो ज़ख़म पे क्या कहते हैं कि नमक जो है वो कर लिया. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट. लेकिन सबसे पहले जो है वो क्या किया, मैंने कहा मैं आऊँगा एवरी सैटरडे, क्योंकि ये पूरा हमारा जो प्रोजेक्ट लीडरशिप पे है. जब लीडर्स को लोग देखेंगे करेंगे उसी को ही जो वो फॉलो करेंगे. आई एम फॉलोइंग माई CEO, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो काम करता है किस तरीके से काम करता है, तो आई एम फॉलोइंग हिज टैक्टिक्स एंड हिज हैबिट्स एंड हाउ ही डील्स. तो कहने का मतलब ये है कि एवरी सैटरडे दिसंबर का महीना आई वुड बी एट ऑफिस. उसके बाद क्या किया है मैंने, उसको शफलिंग कर लिए. 20 मेंबर्स हैं, चले 10 जो है वो एक सैटरडे को आ जाए, 10 टीम मेंबर्स जो है वो दूसरे सैटरडे को आ जाए. तो इससे क्या होगा, एक अल्टरनेटिव शफलिंग भी चलेगी, आपका काम भी जो वो सफ़र नहीं होगा और जो वो सारे जो वो लोग हैप्पी होंगे. चले ठीक है यार एटलीस्ट, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं जो है वो एवरी सैटरडे आ रहा हूँ, बिकॉज फॉलोअर्स फॉलो यू वेरी प्रूडेंटली, सो यू हैव टू बी मेक श्योर.
रिसेंटली हमने क्या किया था, इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ये एआई की जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी कि एक दिन हमने क्या किया था कि हाइब्रिड मॉडल को स्टार्ट किया था कि एक दिन आप जो वो घर से करें। फ्राइडे को अमूमन आपको पता होगा, आई एम हिंदू बट आई नो आप लोग जो मुस्लिम हैं, एक नमाज का टाइम पीरियड भी लंबा हो जाता है 2 घंटे। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि चलें क्या करते हैं कि एक दिन फ्राइडे का जो वो हम ऑनलाइन जो वो काम जो वो स्टार्ट करते हैं। आधे लोग ऑफिस में, आधे लोग जो ऑनलाइन करें। सिमिलरली वाइस वर्सा, वो जो पहले ऑनलाइन घर से काम करते थे फ्राइडे को वो ऑफिस आएंगे, वो इस तरीके से। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कोप अप विद द कल्चर एंड द एथिक्स एंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल। एक जैसे इन्होंने एक अच्छा मिस हना ने पॉइंट आउट किया था कि अपने आप को पहले देखो। जब तक अपने आप को असेस नहीं करेंगे, आप दूसरे को, एम्पैथी का वर्ड आप लोगों ने अगर सुना होगा तो उस तरीके से, लाइक वन मेंबर ऑफ माई टीम, उसके बहुत मसले मसाले हैं सोशल के। इसका फादर इज़ नॉट अलाइव, मदर बीमार है, भाई डाइवोर्स है, सिस्टर की शादी नहीं हो रही। तो डू यू थिंक कि वो बंदा जब सुबह उठेगा और ऑफिस आएगा उसके माइंड में क्या चल रहा होगा? ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम सम पेन। तो उसको जो आपको वो वैल्यू देनी है, वो इथिकली जो चीज़ें देनी है, एम्पैथी करनी है कि भाई चले ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। अनलेस जैसे कहते हैं ना, किसी का दुख आप ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्ले सच काइंड ऑफ द टेक्टिक एंड स्ट्रेटजीज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल लाइफ तो है ही, लेकिन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको पूरी टीम को जो वो साथ में जो वो लेके चलना है। अभी रिसेंटली जो वो आज मुझे पता चला कि द ऑर्गेनाइजेशन गिविंग मी एन अदर डिपार्टमेंट हु आर हैविंग द 20 मोर पीपल। अब इसमें ये है कि अब डिफरेंट लोगों के साथ फिर 20 लोग वो डिफरेंट होंगे, माइंडसेट होगा किस तरीके से, कीपिंग इन माइंड आई हैव ऑल द थिंग्स, आई हैव टू बी क्रिएट अ ट्रस्ट, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई हैव टू बी इंटीग्रेट ऑल द थिंग्स आई हैव टू केयर, बिकॉज हर टीम में, हर ऐसे ग्रुप में एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा, एक दो बंदा मिलेगा जो कि आपको टफ टाइम देगा। इट्स अ रियलिटी, यू कांट इग्नोर इट, बट हाउ यू आर गोइंग टू प्ले विथ हिम और हर, दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू, दैट्स डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप स्किल्स। एक तो जो न्यू डिज़ाइन है जिनकी कामरान साहब ने बात की, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वर्क कल्चर दैट हैज़ आल्सो चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जो इनोवेशन इस वक्त हम देख रहे हैं, पीपल वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल, you know, as soon as the digitalization came, people are working online. You know, now conventionally we were, busy seeing the work culture while you are in office. And we are devising mechanisms, to address issues with the leadership and employees and so many other things, designing values of organizations, for example. What has happened that this digital technology has made people slaves to the work. थोड़ी सी आपको रियलिटी भी देगी। For the information which is now in the air, which allows you to work day and night. Sometimes you are forced, employees are forced to do work because everything is online and you have devices, equipment, you can do it. And if organization gives you a laptop or iPad or a phone, that expect that you work anytime when they see an emergency. So this means your mind is slave to the work anytime. So you are occupied 24 hours. And when you read a human capital theory, it's actually investment on people in terms of their skills, education, to make you more, energetic labor force. And they expect return after you are graduated, after acquiring your skills, whether this degree, you are expecting a return from that. So in economic terms, it's an investment actually, because you might get more pay, you might get promotions, you might earn more money while doing this, specific degree.
And when a counter argument came that a human cannot be, a project. You cannot put money on a human and expect return from that. So that gives you values which are not humane values, because you consider human as a machine, and you control a human's mind, you control a human's freedom, you control a human's feelings. So this is how a challenge has come because of this new designs, new technology, digitization, work from home, and access to information. So now the organizations have become so smart. They say, okay, you work from home, no worry, but you have to complete the job. And they are saving a lot of money for that. And they are enjoying. They have increased their profits by doing this, by offloading their offices and people from offices, and reducing the electricity expenditure, rented buildings, this and that, and just so. In such a scenario, how you maintain that? What are the challenges to the work ethics? Now, some organizations have created to give you more, incentives. Today, for example, I had organizations which are the government. I allowed 5 increments in the honorarium for people. This man worked with the government office, he knows it. So 5 basic pays I allowed to my 45 employees. They are working this and that. But this is not enough actually. If you are not transparent, if you do not do integrity, if you do not respect, if you are biased, your whole work ethics culture is, at verge of collapse. Your organization is at collapse, and you are not meeting your objectives. So, and in any organizations, there are not 100% people who work. For example, the research in HR that say that there are 20% people who hardly knows what is the vision and mission of their organizations. There was a random survey, for example, suddenly, people were called, okay, let's sit and organize a group of 50 people, okay, just write the mission or vision of your organization, nothing else. So only hardly 20%, people. So in any organizations, there are always these challenges. And so you cannot, in a situation, you cannot make everyone happy. So to say that if you cannot make everyone happy, if you want to make happy, you have to sell the ice cream. Because people will be happy, so you have to sell the ice cream. But in organizations, these are the challenges. Now, this digital world, really gave a stress. A lot of benefits has come, but the stress has also come, because this is a mobile I see every time email is coming. Then there is a irritation, then there is also, responsibility, okay. While you are eating or meeting in a family, or you are on dinner, or you are in private gathering, sometime even you don't want, but you are doing it actually. And responding your email. This means you are working 24 hours. And that's against ethics. So those digital world, has really gave many challenges of your individual freedom, of your personal, happenings, personal lives. So I think their organization needs to come up with good. For example, in one organization value, I read that after, in conventional mode, after 5, 6, there shall be no call from any supervisor or any boss or any leader of organizations to apply for the work. That's banned completely. After 6, no call will come. Now, for example, we receive every day call. I can't leave my duty station without approval of Chief Secretary, for example. And I have to tell that I am going outside Karachi, and I have to inform.
So I mean, these are the challenges which we are facing. So organizations also needs to, employ those, work culture ethics, and there's a long way to do that. आई थिंक वंस अगेन मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर दिया है, सो आई ऑलवेज हैव टू थिंक मोर व्हाट इज़ मिसिंग पार्ट, तो मैं उसको थोड़ा सा वैल्यूएट करूँ. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस वन थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट इन यूनिवर्स इज़ अ चेंज. सो चेंज जो है वो तो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट द डिफरेंस जो अभी हमारा है और पास्ट में जो हम देखते हैं दैट इज़ द पेस ऑफ चेंज. यानी पहले जो था वो चेंज था, बट दैट वाज अ काइंड ऑफ स्लो. वर्ल्ड तो इवॉल्व हो रही है, चेंज भी होती है, यूनिवर्स आपका एक फिनोमेना है. अब हुआ ये है कि जैसे सर ने बात की, ही वाज आई थिंक रेफरिंग टू द कैपिटलिज्म अप्रोच के एक ह्यूमन कैपिटल जो बाय डिज़ाइन उसमें नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक चैलेंज, उसे ऐसे टैक्टिक्स के ज़रिए और वर्क के ज़रिए उसे वो काम लेना है ऑर्गेनाइजेशंस को. तो जाहिर है कोई परफेक्टली वी कैन नॉट से कि वो बहुत ही परफेक्ट इंडिविजुअल होगा जो एथिकली उस लेवल पे, जो अगर हम इसकी कोई बेंचमार्क्स बनाते हैं या बनी हुई है हमारी कि ऑनेस्टी, इंटीग्रेशन, वैल्यूज़, एंड देन अगेन क्योंकि शिफ्ट है तो वो चीज़ें भी चेंज हो रही हैं. फॉर इंस्टेंस सर ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि उसी बात में ही हम उसको ऐड ऑन करें कि पहले जो होता था हम जैसे मोबाइल यूज़ करते थे, एंड आई कैन गिव माई एग्जांपल फैमिली में. तो शुरू के स्टार्ट में आपकी अगर कोई ऐसी कॉल या मैसेज आता था तो बड़ा मायूब समझा जाता था, घर में डांट पड़ती थी अब्बा के सामने वहाँ कि आप लोग अगर फैमिली टाइम में तो यू शुड नॉट यूज़ इट. ठीक है. सो नाउ, और ये मैं थोड़े से टाइम की बात बता रही हूँ क्योंकि यानी 10 साल मुझे काम करने की जर्नी हुई है कि आई एम नॉट वेरी लाइक 30 साल का तजुर्बा हो, लेकिन मैं उस स्पेस की बात कर रही हूँ, शिफ्ट की बात कर रही हूँ. उसमें ही इतना चेंज आया कि अब जैसे सर ने बात की कि इट्स important to give respond to the organization. आप एथिक के बारे में कंफ्यूज हो गए कि मुझे अपनी जो फैमिली है वो भी अनएथिकल है कि उसको मैं जवाब दूं. अगर मैं उसको नहीं वर्क प्लेस में जवाब देता और उस बंदे की जिससे मैं कोऑर्डिनेशन में हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अगर कोई ब्लॉक हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, बीइंग अ टीचर अगर मैं कहूँ कि मेरा स्टूडेंट है उसको कोई फॉरेन चीज़ चाहिए, कुछ समझना है, तो मेरे लिए अब क्वेश्चन मार्क ये हो गया कि मैं एथिकली दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. सो देयर इज़ अ सब्जेक्टिव डिबेट. इंटरेस्टिंग पार्ट ये हो गया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव टू नाउ डिसाइड कि कुछ एथिक्स ऐसे हैं जैसे ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, अपने साथ सिंसेरिटी और अपने लोगों के साथ, दैट इज देयर द कोर वैल्यूज़. लेकिन ओवरऑल ये जो शिफ्ट है उससे भी आपकी जो सोसाइटी है इन पर्सन है एंड इवन वर्क कल्चर. एक और चीज़ सर ने बड़ी इंटरेस्टिंग की कि डिज़ाइन में जब हम बात करते हैं कि कैपिटलिज्म टू एआई और जो शिफ्ट है आपका टेक्नोलॉजी, तो आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है इट्स अ 360 डिग्री चेंज. पहले जो एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम दी एम्प्लॉयज़ सिटिंग इन द ऑफिस 8 घंटे वहाँ पे बैठ के काम करना, आज वही जो वर्क है वो आप घर से भी कर सकते हैं, वॉट एवर कैपेसिटी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ योर जॉब, वर्क, टाइम, और फिर आपकी फिजिकल नीड वहाँ कितनी है और आपकी जो ऑनलाइन आप कितना कर सकते हैं. सो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट द वे आई सी इट, एंड इट्स बिकॉज पेस इज टू फास्ट, सो वी हैव टू डिसाइड कि हम उस एथिक्स को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ टेक्निकली ले जा सकते हैं, एंड देन डिज़ाइन में हम कहाँ फिट होते हैं. Very well said. So we will have a last question for the discussion, that is the new dimension of work ethics. So right now जितनी भी हम discussion कर रहे थे that was within the organizational boundaries, but there's a concept of socially responsible organizations. So like CSR, community service, environment protection, and there are so many terms used like ESG index. We have SDGs, we follow sustainable development goals. So what do you think, how can organizations develop this culture of being socially responsible organization within the employees also, this sense of ownership of the community and being careful
while doing any action which might harm the society, community, or maybe environment? ग्रेट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने घर को तो सब साफ़ करते हैं, जब जो है वो बारी आती है कि अपने मोहल्ले को तो सारे कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में तो हर कोई पॉलिसीज़ एथिकल की सारी बातें करते हैं, लेकिन व्हाट यू आर गिविंग टू सोसाइटी वो बड़ी जो है वो मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि सुबह से आए शाम तक काम किया, मंथ एंड पे आपकी सैलरी अकाउंट में गिर गई, दैट्स इट, और लोग जो खुश हैं, आपके अंडर जितने भी फेलोज़ हैं वो काम कर रहे हैं, उनको भी सैलरी मिल रही है, आपका मकसद पूरा हो गया, पैसे आ रहे हैं, किचन चल रहा है, सब कुछ है। नहीं, लेकिन इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशंस भी किस तरीके से जो है सोसाइटी होती है। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये डिपार्टमेंट जो है वो आया हुआ है। इसका ये मतलब है कि आप जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकली अपने एंड तक नहीं है, अब आगे जो एनवायरनमेंट को भी जो वो आपको देना है। जहाँ तक हो सकता है आप अपने जो है वो लोगों को आगे जो है वो इन्फॉर्मेशन दें। जैसे रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट है बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, इस पर पूरी दुनिया जो वो काम कर रही है। इवन जब मैं अभी यूएसए में था तो उस टाइम पे मुझसे मिस हो गया, उनकी एक वो कॉन्फ्रेंस भी थी सितंबर में, तो वो लोग जो इवन इतने डेवलप्ड कंट्री होके भी उस चीज़ पे जो वो काम कर रहे हैं कि नहीं, नाउ इट्स द टाइम टू गिव इट टू दी पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टैक्टिक्स करके जो वो करती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। गोल्स, हाउ यू आर गिविंग इक्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी, और बहुत सारे जो है वो ज़ीरो हंगर, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें 17 गोल्स हैं। ज़ाहिर बात है, वही मैं बार बार कहता हूँ कि हम चीज़ों को ख़त्म जो है वो जड़ से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी एफर्ट्स करके उसको कम जो है वो कर सकते हैं। अभी हम रिसेंटली जो वो क्या कर रहे हैं, एक जो है वो शऊर पैदा कर रहे हैं लोगों को। एजुकेशन तो हर कोई कहता है कि एजुकेशन, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो है वो देना वो बड़ा जो वो मायने रखता है। अब किस तरीके से यूनिवर्सिटी से इंटरेक्ट करके हमारे जो आप लोग हैं, आप लोग जो कल निकलेंगे माशाल्लाह, अभी तो आप तो मेरे ख्याल से मोर देन 80% आर वर्किंग, ऑलरेडी वर्किंग, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 20%? क्या उनका हक नहीं है कि वो भी जो काम करें? उनके लिए ही जो है वो एक एसटीजी बनाए जाते हैं कि किस तरीके से आपकी कैरियर काउंसलिंग हो जाए, किस तरीके से आपको इंटरव्यूइंग स्किल्स दी जाए। ये सारी चीज़ें जो वो पॉसिबल हैं जब एक जो है वो इदारा और दूसरे जो वो कंपनीज आपस में जो साथ मिल करके एक अच्छे जो वो टारगेट और गोल को अचीव करे, ताकि जो वो हमारा फ्यूचर जनरेशन और यूथ जो है वो भी उस तरीके से जो ग्रूम करे जैसे कि जो वो हम चाहते हैं। हो सकता है हम उस टाइम पे थे जहाँ पे हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तो सारे अब माशाल्लाह जो पढ़े लिखे आपको सारी फैसिलिटीज़ वो जो हैं। तो कमिंग बैक टू दी मेन क्वेश्चन कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डज एग्जिस्ट, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी जो डिपार्टमेंट्स जो बना लिए हैं उस पर जो वो काम भी जो वो कर रहे हैं और जो अच्छे तरीके से जो कर रहे हैं। तो एथिकली वैल्यूज़ इंटरनल स्टेक होल्डर का तो है ही है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी जो वो ऐसे ही जो होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ डिपार्टमेंट आपने बना दिया, आप क्लाइंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, अब कस्टमर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हम काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? दे आर द क्लाइंट्स। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट्स बना रही हैं क्लाइंट्स के लिए, हॉस्पिटल से और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस लिए हैं? वो भी सर्विसेज जो वो दे रही हैं, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं। वो कहते हैं ना कि एक जो है वो हैप्पी कस्टमर ब्रिंग्स यू गिव बैक द लॉट ऑफ द कस्टमर, लेकिन एक अनहैप्पी कस्टमर है वो आपको इस तरीके से जो वो डाइवर्ट करेगा कि आपके लिए थोड़ा सा जो वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कीपिंग इन व्यू ऑल दीज थिंग्स, यू the organization not only have to think about themselves but the others, for the peoples, for the society as well. Very good. Socially responsible organizations, how they can do. इसमें देखें दो चीज़ें हैं। Corporate social responsibility on one way is very important and it's appreciated. But this is also considered as a one tool from capitalists or from organizations to protect their commercial benefits. And for example, an organization of oil and gas,
doing corporate responsibility job by, opening a school in that part where their plants are located, or give people benefit. That's always appreciated. The social responsibility is not for commercial benefits, actually. That should come from the heart. The intention should be to develop a good society. Intention should not be to maximize the profit of organizations or protect their commercial interests by hook or crook, or protect their commercial interests by, feeding small amount to community, rural community or a poor community or urban slums. So this is very tricky, actually. But the organizations which is very sincere to their employees and community and stakeholders does not, grow with profits. They grow with developments. They grow with customer satisfactions. They grow with employees' job satisfactions. They grow with accountability, and they grow with transparency. Here, you have to develop that part. That organization is in real sense socially responsible, not only on creating good work ethics, but also taking care of the employees. For example, in one organization in the UK, a consultant came to me. He worked in 90s, and I saw him when I was a young officer. Recently he came, he said that I'm still working with that organizations. I said, why you are working for last 30 years? He said, I am owner of the organizations. I said, how? He said that as soon as you reach a certain point of an experience, of your contributions, of a number of projects you did successfully, you ultimately, automatically you reach or entered into an ownership model. Okay. So, and certain shares are given to him automatically. So this is how organizations, take care of their employees. So it's not that you worked for 30 years and at the end you left with nothing. You become owner of that organization. You are part of, there must be so many owners. So this work culture, socially, I think it's very important to have a positive culture where these elements of taking care, for example, for women, those staff who are single women or single mothers. In Google you go, there are sports grounds, there are, homes there are so many, things for women, for men, for children, their children, they are coming and enjoying there while you are working. So because they don't want to, lose that brain which they have acquired or, employed after certain processes. In an organization where the turnover is more than 10%, this means people are leaving you, or maybe more than 20%. Similarly, it's also important for organizations to have turnover, so that new blood should come, new thoughts should come, new innovations should come. People for 30 years may become rhetoric, for example, same thing is repeating, same thing. So it's important for organizations to be modern, to be not, faded, like example of Fiat company, the automobile company of Fiat. If you go into Turin, I have been there, it was, the Fiat headquarters was in Turin.
In Italy, they call it Torino. So Turin city had 50,000 employees of Fiat company. And now these days the only museum of Fiat there, which I have seen, because they couldn't compete that. Similarly, in mobile industry, we heard BlackBerry. Once it was a BlackBerry means a symbol of pride, privilege, and it was just 20 years back, I think. But and then Nokia came. Both are, we don't use it actually. We are here, nobody owns BlackBerry. The company is still there, or a Nokia, or so this is how you change. Now you only change by taking care of your employees, becoming more socially responsible, becoming less concentrate to your commercial benefits, more concentrate to your society, while not going into loss actually. So these are new things coming into investing in work ethics, good culture, taking care of your children, families. So these organizations really have become success models. Okay. While Bill Gates, for example, if he goes and buy a burger by being in the line, it gives him ethically he is rich. If he could have gone to helicopter to buy any small things. There are rich people who does this, who hates such organizations, but they go simple way. And when they go simple way, it means they believe in something, a good culture. So I think this is important to be a socially responsible organization. Very good. Thank you. Thank you. I think it sounds very interesting to just be talking about this thing, value culture, and then coming to the society and corporate social responsibility. Two things I would say, हम दो चीज़ों को अगर एक साथ मिलाएं, inclusivity with sustainability. So when we talk about inclusivity, it means all human beings are humans, और उनको हमें इस सारी चीज़ से कि वो वुमेन है, वो किसी भी तरीके से स्पेशल नीड है, चैलेंजिंग है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे नज़र में, दैट इज़ अगेन आवर लेंस टू सी द वर्ल्ड, हमारी नज़र में वो डिफरेंट है या डिफरेंटली एबल है या डिफरेंट उसके ट्रेट्स हैं या कोई भी चीज़ या रिलीजन है, रेस है, वॉट एवर वी सी एट दैट पर्सन. सेकेंड थिंग इज सस्टेनेबिलिटी. अभी जो दुनिया इवॉल्व हो रही है, अगेन वी आर इन अ इवॉल्विंग कंटिन्यूस फेज. उसमें क्या है कि हमें जो ह्यूमन है उसको अब प्रायोरिटाइज करना होगा. ह्यूमन को कैपिटलिज्म से निकाल के, इकॉनमी के चैलेंजेस से निकाल के, जहाँ हम इस सस्टेनेबल मॉडल को लेते आएंगे, ह्यूमन को सबसे पहले तो इंसान समझ के और इंटीग्रेशन में लाएंगे, एथिक्स आपके खुद ब खुद वापस आना शुरू हो जाएंगे. सो जहाँ हमने डिस्कनेक्ट किया है अपने आप से, वहाँ हम कनेक्शन में वापस आ जाएंगे. तो जो हम बड़ी टर्म्स यूज़ करते हैं थ्योरी में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग to see in a terminology के corporate social responsibility. Corporate social responsibility का तो मेरे ख्याल से तस्वुर ऐसे होना ही नहीं चाहिए था कि हम इस लेवल पे आ जाएं कि हमें वो बार बार याद दहानी करानी पड़े कि यू आर रिस्पॉन्सिबल. यानी अगर आप इसकी साइकी देखें तो यानी हम कमर्शलिज्म में इतना आगे, कैपिटलिज्म में इतना आगे चले गए कि हम अपनी जो कोर हमारा एज ए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसको हम सोशल या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, बीइंग ऑथेंटिक, बीइंग इंटीग्रेटेड, नॉट बीइंग फेक, बीइंग ऑनेस्ट टू योर वर्क, टू योर सेल्फ, वो हमें अब वापस उस पर बात करनी पड़ी है. सो बेसिकली इट्स ओल्ड विजडम जो हम दोबारा से रिविजिट कर रहे हैं इन ए न्यू वर्ल्ड. तो मेरे हिसाब से जस्ट टू कंक्लूड दीज लाइंस के जो मैंने शुरू में बात की कि हमें सस्टेनेबिलिटी को अगर लाना है तो ह्यूमन इंक्लूसिविटी को लाना है. सो दैट विल, आपके बहुत सारे हम सब के मसले हल हो सकते हैं. थैंक यू. Thank you very much.
I think it was very comprehensive discussion. Now I open the forum for your comments and questions. If you have any questions, please feel free to ask. Good evening, sir. First of all, I'm very thankful to our program manager that he has arranged such a great panel discussion. And secondly, I'm very thankful to all three of you that you have given your time and you have shared your experience as well with us. So, as we were discussing about these questions, so I noted down some questions regarding this work ethical culture. So, first I would like to ask question from Sir Ramesh, and it's a very simple one. If you are the leader, I believe and I hope that I should get a leader as yours, because you said that if a person who is engaged in some personal problems and he's coming to his workplace and he has to perform all the professional activities and you are coping up with him regarding his personal problems, so it is very good. So if a leader is not like you, then what is the suggestion that because some leaders are say that professionally they are very strict, so how can we cope up with them? टू बी ऑनेस्ट, पर्सनल और प्रोफेशनलिज्म जो है वो मैनेज करना जो इतना आसान जो वो नहीं होता बिल्कुल है। क्योंकि एक बंदे की जितनी, जैसे आपने बताई कि इतने सारे मसले मसाइल थे पर्सनल लेवल पे, जो वो बड़ा जो होता ये है कि उसके साथ फिर जो बैठ के एक दिन जो वो, बिकॉज आई ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन 3 years बैक, तब वो बंदा था, एंड वेन एवर आई saw that guy, he always used to be stressed और बिल्कुल खामोश तबीयत में काम करता था, आता था और जाता था। तो जब मैंने उससे एक्चुअली पूछा कि भाई मसला क्या है, क्योंकि जब आप किसी को बताएंगे नहीं, अपने अंदर ही जो छुपा के रखेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट और वन डे इट विल ब्लास्ट लाइक अ बॉम्ब। सो उसके साथ बैठना, करना, उसके इश्यूज समझना और उसको इस तरीके से केटर करना कि चले ठीक है ये चीज़ें अपनी जगह पे और जो बाकी जो चीज़ें प्रोफेशनल, उसको थोड़ी सी लीनियंसी बनी थी। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि इसको जो ज़्यादा टाइम देना, एज ए लीडर मेरे पास और अगर 15 लोग हैं तो उसका कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि एक डिस्क्रिमिनेशन एलिमेंट जो उठे, सही, दूसरे लोगों को कहें कि भाई ये जो उसको जो ज़्यादा टाइम दे रहा है, इसको जो वो कम जो वर्किंग आवर्स दे रहा है, उसको मज़ीद अटेंशन दे रहा है, ऐसा नहीं है। आई हैव टू पिक ए बैलेंस। अगर कोई और होता और था, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन, ही हैज़ बीन फॉर मोर देन 10 years नाउ, 10 साल हो गए उसको ऑर्गेनाइजेशन में, और अब जो वो काम करता है और पिछले जो है वो 2 साल में जब इसको मैं कंपेरिजन करता हूँ, मैं तो करता ही करता हूँ, लेकिन एक्चुअल आपकी जो परफॉर्मेंस पता है कम होती है। द थिंग इज़ दैट, जो मैं बिलीव करता हूँ कि फॉरगेट हू यू आर, रिमेंबर व्हाट यू डू। आप अपने काम से जो पहचाने जाते हैं, नाम से तो हर कोई जो आपको बुला लेगा कोई, लेकिन जो काम आप करेंगे ना, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें चेंज जो मैंने देखा, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले लोग थे उन्होंने भी देखा कि हाँ यार इसमें थोड़ा बहुत जो है वो आना करना, अभी लंच करता है, डिस्कशन करता है, चीज़ें थोड़ा सा स्लाइटली जो वो चेंज होता है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्ले विद द माइंड सेट ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी हैविंग अ डिफरेंट इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम्स एट द होम, एट द सोसाइटी। तो इस तरीके से जो चीज़ें। सर, आप कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा इस बात पे कि आप जैसे लीडर्स जो हैं, यू गाइज आर लाइक अ ब्लेसिंग टू दीज पीपल, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ जो लीडर्स होते हैं वो यही कहते हैं स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, नथिंग पर्सनल। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप कोप अप करते हैं, इट्स वेरी गुड थिंग। थैंक यू। अच्छा सर, आपसे भी क्वेश्चन और मैम आपसे भी। सर आपसे एंड में करूँगा क्योंकि गवर्नमेंट के हवाले से तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैम आपसे एक क्वेश्चन है, आपने अपनी अभी कन्वर्जेशन में एक बात की कंट्रोल ऑन एंगर, जो कि आपका तभी आपने सही कहा, जब ऐसे टफ टाइम्स आते हैं तब पता चलता है कि आप कितने एथिकल हैं और कितने नहीं हैं। तो फॉर एग्जांपल आई बिलीव कि ये दोनों के लिए होना चाहिए, सेम फॉर द लीडर एंड सेम फॉर द जो आपकी टीम में मेंबर है। तो इफ़ योर लीडर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड उनका एंगर जो है वो अब आपके एंगर के मतलब भारी हो गया है, तो मतलब हाउ टू कोप अप विद दैट थिंग, मतलब उनको कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज ही इज़ अ सुपरवाइजर, ही इज़ अ मैनेजर, वट एवर ही इज़। तो वो लीडरशिप की क्वालिटी फिर उनकी कहाँ गई और हम उसको कोप कैसे करें? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड जो आपने कहा कि हम बोल नहीं सकते, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाउ टू कम्युनिकेट, ठीक है, देयर इज अ थिन लाइन। सो मोस्ट डिफिकल्ट
सिचुएशंस लाइफ में आए, देन हाउ डू यू कम्युनिकेट. ये मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ. कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना आपका 50% इवन 70% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. सो जो लीडर है, अब वो ज़रूरी नहीं है लीडर है, इसमें एक पूरी डिबेट है कि वो मैनेजर है, मैनेजमेंट में है, और वो किस पर्सनालिटी टाइप का है, फिर वहाँ पे उसके क्या चैलेंजेस हैं, वो किस पर्सोना से आता है आपके पास, या क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है. तो वो किसी भी गैप की वजह से रिएक्टिव हो सकता है, एंड वाइस वर्सा, विच इज़ ओके. वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी आर इन सर्टेन हायरार्की में. दिस इज द वर्क प्लेस थिंग. तो अब आ जाता है रोल ऑफ कि वो एज अ मैनेजर कैसे है, और एज अ, यानी अगर आप फर्स्ट करें, आप कहते हैं कि आपका सुपरवाइजर जो है वो आप इस सिचुएशन में है, एंड विच इज़ ओके. पहले तो जस्ट काम फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेल्फ. दो तरीके होते हैं, रिएक्ट एंड टू रिस्पॉन्ड. सो वी हैव टू डिसाइड. मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, आई एम द पर्सन जो जल्दी जिसका एंगर रहे थे पैसिव एग्रेसिव, ठीक है, बट देन आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, और आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व ज़ाहिर है आप होते हैं अपने ऊपर काम सबसे पहले करते हैं, देन यू कैन से समबडी. तो आप के केस में मुझे ये लगता है कि आपने पहले जो भी चीज़ आती है, यू हैव टू सी कि आई हैव टू रिएक्ट or to respond. अगर यहाँ पे दिस इज अ वेरी थिन लाइन, और रोज रात को अगर सोने से पहले अपने साथ ये प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज गाड़ी में भी आप जाएंगे तो हॉर्न बजाने वाले भी आपको तंग करेंगे, स्पेस वर्क प्लेस में भी करेंगे, बॉस भी करेगा, हर जगह पे हर किस्म के लोग. सो इन योर सिचुएशन देन अगर आपने डिसाइड कर दिया नो आई हैव टू रिस्पॉन्ड. वाई? बिकॉज आई हैव टू रिस्पॉन्ड करना इज अ मेच्योर थिंग, एंड रिएक्ट करना तो हर कोई बच्चा भी करता है. बच्चा तो आई वोंट से, बट एनी कैन रिएक्ट, एनीवन कैन रिएक्ट. सो पहली बात कि आपने कहा रिस्पॉन्ड करना है. अब रिस्पॉन्ड करना कैसे है? दो चीजें. एक चीज है कि मैं सप्रेस कर रहा हूं मेरे साथ जो नाइंसाफी हो रही है वर्क प्लेस में, एंड दैट इज ट्रू, मेनी टाइम्स होता है, विच इज पार्ट ऑफ जहां हम जिस कल्चर में काम करते हैं. फॉर इंस्टेंस यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड स्टफ, सो ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस आ सकती हैं. अब आपने यही जो है ना, कहते हैं कि आजमाइश भी है और यही ब्लेसिंग भी है कि आपने उसको देख लिया, हाँ मुझे रिस्पॉन्ड करना है, देन हाउ. क्या मेरे साथ सप्रेशन की वजह से नाइंसाफी हो रही है, या मेरे काउंटर, क्योंकि वो फिर एक के साथ नहीं होगी, वो सिस्टम होगा. जनरली हमारे यहाँ जब हम कल्चर की बात करते हैं वो कल्चर होगा. तो अब मुझे उसको कैसे लेके चलना है, देन मेरे पर्सनल उसमें डैमेज कितना है और सोशल डैमेज कितना है. ठीक है, यहाँ इंटीग्रिटी आती है, यहाँ इंटीग्रिटी आती है, यहाँ आपकी ऑनेस्टी आती है, यहाँ आपका सच आता है. तो सच बोलना है, लेकिन तरीके से बोलना है, लॉजिकली बोलना है, रैशनली बोलना है, कन्विंसिंग बोलना है. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता. आई नो ये जर्नी आसान नहीं होती. आपको बहुत से लोग जो है वो इनफैक्ट इतने लोग आपको पुश बैक करते हैं, बट दिस इज योर स्ट्रेंथ वेयर यू हैव टू स्टैंड. सही, थैंक यू मैम. अच्छा सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन है, तो नो ऑफेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड नो ऑफेंस पर्सनली एज वेल. गवर्नमेंट जो है वो, अब जब भी यहाँ पे प्रेजेंटेशंस होती थी तो इंट्रोडक्शन करवाते थे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो जब भी गवर्नमेंट का जिक्र होता तो सारे बड़े हंसते भी थे और देखते थे, विच इज़ अ ट्रू फैक्ट. तो अब सर जैसे जो डार्क रियलिटीज़ हैं, वर्क एथिक्स की जो बात है, अब जैसे आप लोग के प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पे समझ आता है कि यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू बी इन वेल ड्रेस्ड फॉर्म्स. गवर्नमेंट में भी होता है, लेकिन बाज़-औक़ात काफ़ी जगह पे गवर्नमेंट में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कोई आ नहीं रहा, कोई एक बंदा आ रहा है, कोई टाइम पे नहीं आ रहा, तो मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी का फ़ोन अच्छा है, किसी का कोई सोर्स है, तो मतलब फिर वहाँ पे वर्क एथिक तो बहुत मुश्किल है. मैंने फेस नहीं किया, मतलब मैंने जहाँ पे भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम किया है, 2-3 में किया है, तो बड़े अच्छे से किया है, मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है. बट आई हैव ऑब्जर्व थिंग्स के यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए. मतलब अगर किसी का कोई नहीं है सेटअप, तो इफ़ यू आई एम कमिंग ऑन टाइम एंड द अदर पर्सन इज़ नॉट कमिंग, तो ये कैसे होगा? मतलब वर्क एथिक्स कहाँ गया फिर वहाँ पे? देखिए, इसमें let's distinguish private sector and public sector. Now, what's the art of politics and economy in this? Private sector is owned by individuals, families. Okay, and when those business ventures are owned by an individual or a family, they are more careful towards their benefits and interests. Agree. Okay.
That's why they always seek efficiency. They always see, yielding maximum output from employees, from machines, from every resource that they put to get benefits, to get more products, more yields. That's why here comes the difference. They don't want to allow people to come, late, for example. They want people, human, to work as machines also. They Agree. also want to be more efficient and maybe improved in their governance systems. But that ultimate benefits to them financially, actually, the end outcome. Because they will get more benefits, more products, more selling, many things. Now, they are responsible as organizations to follow values, and they have to. They have to create work culture, they have to create, because there are fundamental principles overall in the world, norms which standardize things, which, for example, in many countries, they have just, banned Pasi ki saza. People are not hanged Yes. in many countries. In many countries, that punishment is still, capital punishment is still valid. Forget the crime what they did, but they said, okay, if someone has killed 50 people, he cannot be hanged or she cannot be hanged. Because they see another light in that people, that they see this is against spirit of humanity. For example, there was a time 100 years back or 1000 years back, for example, to kill a person through torture. They give torture and they don't want to kill the person at single point, at a small moment. No. They say torture for 5 days, for 10 days, for 1 month, till he or she dies. That was a punishment. And then they realized after few hundred years back, they realized, no, this is not good thing. The person needs to be punished, needs to be killed, who has done the crime. But you can kill him or her in other way. And you remember, different punishment came. So one was injecting Poison. and the person died. The other one was shoot. So at a point he or she will die just suddenly. And then poison, eating something. But then they came that no, person has to live. He or she cannot be killed despite of doing so much crimes. So they banned it. Now in many societies they say if someone has killed her, he can be hanged. So normally in so many countries there is a proud punishment of killing a people in law. So things are getting changed. Now coming to your point, in public sector, for example, that efficiency lacks because it's a money which owned by everyone. It's a tax money, it's a money of ours, it's a money of society. And now society as a whole, there lacks a collective shared vision, there lacks a democracy, there lacks a good governance, there lacks a shared vision. So these all things, they made us as a loose combination to allow such system to work efficiently, to follow phone calls, to follow promotions, sweet bills. So on one way, there are reasons not to compare with public, because if we as a society more conscious, then the systems would be not like this. Then system would be that if the Canadian president, for example, had a lunch of $60, at the cost of government expenses, the society say, no, you can't
have a lunch from government money because you are on the private visits. Why did you charge government of $60? So because they follow those all ethics and a shared visions and a collective responsibilities. So when this collective responsibilities and a sense of democracy will come, this efficiency will definitely come. तो सर हम कंक्लूजन में इसको ये कह सकते हैं कि देर इज़ अ लैक ऑफ वर्क एथिक्स इन गवर्नमेंट सेक्टर्स. मतलब मैं वो इसको एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मतलब कह सकते हैं फिर कि लैकनेस है. At the moment, Yes, we can observe that there is a lackness. yeah.